ज़रा बात कर लेते हैं हमारे कुछ मेहमानों से। फ़लस्तीन और इसराइल का जो तनाज़ा है उसके हवाले से। गज़ा में इसराइल की बमबारी दूसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है। कशीदगी में अब तक 85 बच्चों और 34 ख़वातीन समेत 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं, मगर आलमी ज़मीर अभी तक सोया हुआ है। 57 ममालिक की जो नुमाइंदा तंजीम है OIC, उसने सऊदी अरब की दरख्वास्त पर वज़राए ख़ारजा का हंगामी इजलास तलब किया, जिसमें ना इक़्तिसादी बायकॉट की बात हुई, ना किसी एक्शन का मुतालबा किया गया। बस फ़लस्तीन पर इसराइली बमबारी और जो वहशियाना हमले हैं उनको एक रिवायती करारदाद मंजूर करके निपटा दिया गया, मजम्मत कर दी गई। अब गज़ा की जो सूरत हाल है उससे मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा का सलामती कौंसिल का इजलास भी बुला लिया गया है और यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली का इजलास बुला लिया गया है। जो सलामती कौंसिल का इजलास था वो तो बेनतीजा ख़त्म हो गया था। अब इसराइल पर किस किस्म का दबाव डाला जाए, किस किस्म का दबाव डाला जा सकता है कि ये जुल्म का सिलसिला, बर्बरियत का सिलसिला ख़त्म हो। और एक और सवाल है कि वो दबाव डालेगा कौन? बिल्कुल, किसके दबाव में असर होगा कि कौन ऐसा है कि जो कि इस हवाले से बात कर सकता है और कंट्रोल कर सकता है इसराइल को। फिर दूसरा, इस मामले की जो तारीख़ी अहमियत है, तारीख़ी हैसियत है, और क्यों ये पूरा ख़ित्ता तीनों इब्राहिमी जो मज़ाहिब हैं उनके लिए अहम है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे इस सेगमेंट में। बिल्कुल, हमारे साथ नाज़रीन मौजूद हैं, हिस्टोरियन हैं जो कि तारीख़ पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं, बहुत पढ़ते हैं तारीख़ के हवाले से। अदनान रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। और हमारे साथ पैलेस्टीनियन हेड ऑफ मिशन पाकिस्तान से नादर अल्तुर्क साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Thank you for joining us. So, starting from you, His Excellency, how do you see the world at this point? Like, do you think there are conventions? We were reading and we have these pages. There are conventions, there are law guidelines for, war crimes. What will constitute a war crime? Do you think these conventions and these Geneva conventions and all these things help this cause or have ever helped it? Assalamu alaikum again. Good morning for all of you. Good morning for all your Pakistani brothers and sisters. Actually, we need to have difference between what is the international law speak, what Geneva speak, and what happened on the ground. Actually, Israel usually deal since long years as it is above all the laws, above the international society, ignoring all of that and act what she like to do. And we usually said in Arabic, "Man amina al-iqab, tamam asa al-adab," which mean who is feel secure from punishment, he will behave bad. And that's what Israeli do daily in Palestine since it was establishing in our restoring lands in 1948. We get, just to remind you, we get about 700 resolution from United Nations. 700 resolution from United Nations General Assembly. We have about 86 resolution from Security Council of United Nations. And all of that not activate on the ground because the Israelis refuse to do that. And do you have any resolutions from OIC? And how many from them? I can't. Actually, OIC was establishing according to the case of Palestine. As you remember, in 1969, one of the Zionism tried to burn fire in Aqsa Masjid and it was destroyed. Destroyed the member of Salah ad-Din, which is very old and historical member for the masjid. And according to that, the Muslim countries decide to establishing OIC to defend Palestine and defend Aqsa Masjid. So OIC actually was establishing for Palestine and for Aqsa Masjid. Cause of establishing so all OIC the duties what they are do from since that time until now is this. Defending Palestine and Aqsa Masjid. So you can't speak about resolution because they are already established only for this purpose. Issue, okay? So we thanks Arab countries, Muslim Ummah for their hard work to support Palestine. But the problem what we are dealing with enemy is looking for itself that is above everything, above humanity, above law, above international society. And one of the problems that they are getting blindly support from the Americans. According to that, they feel that there is superpower support them and defend them. Even in the Security Council, you saw 2 days before, it was not
easy to get a resolution to stop or force fire in Gaza and stop the criminal action by the Israelis there, because the Americans refused this kind of resolution, okay? And give them more and more time to kill more and more civilians in Gaza. Okay. Exactly, and there are several Western countries who are supporting Israel. They are supporting their cause, that they are actually fighting in their self-defense. अदनान साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ. ये जो खित्ता है मुसलमानों के लिए तो इसकी अहमियत है ही. ये तो हम सबको जब पता है कि ये हमारा क़िबला अव्वल था और इसके लिए हम सब के कोई जज्बाती वाबस्तगी तो है, लेकिन जो यहूदियों के लिए और ईसाइयों के लिए भी ये खित्ता बहुत ज़्यादा अहम है. अब ये जो मामला है, जो जंग है, इसकी थोड़ी सी अगर आप हिस्ट्री हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें, और फिर वो मामला भी कि मुसलमान और यहूदी, बड़ी प्रोटेक्शन दी है मुसलमानों ने यहूदियों को हमेशा से हिस्ट्री में देखा जाए, लेकिन अब जो मामला आया है वो बिल्कुल उसके बरक्स हो गया. We'll come back to you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू. सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि ये जो एक इम्प्रेशन दिया जाता है इसराइली गवर्नमेंट के प्रोपेगेंडे से कि मुसलमान जो हैं वो यहूदियों के अज़ल से दुश्मन हैं और यहूदियों को कत्ल करना चाहते हैं, यहूदियों को ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए इसराइल की स्टेट हमें बनानी पड़ी और हमें जो एट्रोसिटीज़ हम कर रहे हैं वो करनी पड़ी. ये एक जो है एक झूठ है और इफ्तरा है. हकीकत ये है कि 1000 साल से ज़्यादा मुसलमानों ने यहूदियों को प्रोटेक्शन दी. फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ इस्लाम, शुरू से लेकर 1948 तक, जब तक स्टेट ऑफ इसराइल नहीं बनी थी, यहूदियों की बहुत बड़ी अक्सरियत मुस्लिम ममालिक में जो है वो बस रही थी. मराकश से लेकर इंडिया तक, हिंदुस्तान में भी जो है यहूदियों ने पनाह ली मुस्लिम गवर्नमेंट्स के अंडर. तो ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है इसराइल की स्टेट की तरफ से, स्टेट प्रोपेगेंडा है कि पूरी दुनिया के मुसलमान यहूदियों के दुश्मन हैं, देयरफॉर वी नीड अ स्टेट टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स. ये एक झूठ है, इफ्तरा है. तारीख़ की नज़र में देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े मौरख़ीन, यहूदी मौरख़ीन ने इस चीज़ की वजाहत कर दी है कि 1000 साल जो यहूदी दुनिया में बचे, क्योंकि यूरोपियन जो वेस्टर्न वर्ल्ड जो थी उस टाइम, वो यहूदियों को पर्सिक्यूट कर रही थी, उन पर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ दिए उन्होंने, क्योंकि वो यहूदियों को ये इल्ज़ाम देते थे कि आपने हमारे खुदा को मार दिया. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा माना जाता है मसीही दुनिया में, तो आपने हमारे खुदा को सूली दे दी, इसलिए आपकी ज़िंदगी भी हराम कर दी जाएगी. इसीलिए यहूदी आबादियों ने मुस्लिम इलाकों में पनाहें ली. मिसाल के तौर पे ईसाई जो है वो उन पर जुल्म कर रहे थे, बिल्कुल की वजह से 700 साल मुसलमानों ने स्पेन में हुकूमत की और यहूदी उस दौर को अपनी गोल्डन एज कहते हैं. उसी दौरान उन्हीं 7 सदियों में सबसे बेहतरीन स्कॉलर्स, शुअरा, बुलगा, खुतबा यहूदियों की दुनिया में जो पैदा हुए, बल्कि उनके सबसे बड़े स्कॉलर मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जो उनके यहाँ सबसे अहम शख्सियत है, उनका नाम है मूसा बिन मैमून, माइमोनिडीज़. उनकी पैदाइश करतबा में हुई इस्लामी दौर में, और बाद में उन्होंने पनाह ली हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में मिस्र में. तो ये सब चीज़ें जो है सबके सामने हैं. तो सर पर ये शुरू कहाँ से हुआ, ये जो इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, ये शुरू कहाँ से हुआ? और दुनिया ने तो मान ली इजराइल की बात, दुनिया तो द वर्ल्ड बिलीव्स कि भाई जो इजराइल कह रहा है कि भाई हम यहूदियों को मुसलमानों से ख़तरा है, वी आर सेविंग एंड प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स, वो सेल्फ डिफेंस. देखें पत्थरों की तस्वीरें आ रही हैं और वो कह रहे हैं सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं. तो ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे स्टार्ट हुआ? ये कॉन्फ्लिक्ट 1948 में शुरू हुआ, जो ऑफिशियल डेट दी जाती है, लेकिन उससे पहले शुरू हो चुका था. पहली जंग अजीम के नतीजे में जब बरतानिया ने फ़लस्तीन के इलाके पर कब्ज़ा किया, उस्मानी हुकूमत से वो कब्ज़ा लिया, जनरल एलन बी 1917 में यरूशलेम में दाखिल हुए और उसके बाद बैल्फोर डिक्लेरेशन आई. बैल्फोर जिसको अभी कुछ साल पहले 100 साल भी मुकम्मल हो गए. जी बिल्कुल. और बड़ा सेलिब्रेट भी किया. वो इलाका जो उनका नहीं था, उन्होंने लिख के जो है ये एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, ज़ायनिस्ट मूवमेंट थी, इसके हवाले कर दिया. और ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है. ये उसी तरह एक रेसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिस तरह हिंदुत्वा इंडिया में जो है, और इनके ताने बाने, ज़ायनिज़्म के ताने बाने हिंदुत्वा के साथ भी जुड़ते हैं. ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कहाँ इंडिया और कहाँ इसराइल, और इनके ताने बाने पॉलिटिकली आपस में जुड़ते हैं. तो ज़ायनिज़्म एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जो 19वीं सदी ईस्वी में यूरोप में कुछ यहूदियों ने शुरू की, और इसको यहूदियत के साथ जोड़ना जो है वो यहूदियों के साथ भी एक ज़्यादती है.
जिस तरह हम आज के दौर में कुछ एक्सट्रीमिस्ट हैं, कुछ दहशतगर्द हैं, उनको इस्लाम के साथ नहीं जोड़ सकते, इसी तरह ज़ायनिज़्म एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम यहूदियों के साथ नती नहीं कर सकते। तो उसमें डिस्टिंक्शन है। 1948 में जब ऑफिशियली स्टेट ऑफ इसराइल को डिक्लेयर किया गया, उसके बाद जब ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने मुसलमानों के खिलाफ, फ़लस्तीनियों के खिलाफ जुल्म ढाए और हालात बदले, सियासी हालात बदले, तो मराकश से लेकर हिंदुस्तान तक जितने भी यहूदी मुसलमान इलाकों में बसते थे, उन्होंने हिजरत शुरू कर दी इसराइल की तरफ, और उसके बाद जो है वो उन्होंने अपने आप को इसराइल में बंद कर लिया। और मगरबी ममालिक जो है, अमेरिका, बरतानिया या यूरोपियन ममालिक है, उनकी सपोर्ट अपने लिए सिक्योर की। और उसके बाद वो जिस तरह हिज एक्सेलेंसी इन्होंने बताया कि जो पनिशमेंट से या रिकम्पेंस से जिसको आज़ाद कर दिया जाए, जिसको अमन मिल जाए, वो कोई भी जुर्म ढाएगा, वो कोई भी जुर्म करेगा। अगर आप एक मुजरिम को कह दें कि तुम आज़ाद हो, तुम जितने मर्जी जराइम कर लो, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। और रस्मी तौर पे ये होता है कि यूनाइटेड नेशंस में स्पीचेस कर दी जाती हैं, रेजोल्यूशन पास हो जाती हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल, पूरी दुनिया की जो इंसानी हुकूक की ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने रेजोल्यूशंस पास किए हुए इसराइल के खिलाफ। लेकिन इसराइल एक ऐसा बिगड़ा हुआ बच्चा है अमेरिका का कि उनको ब्लैंक चेक दिया हुआ कि आप जो मर्जी करें, जहाँ मर्जी। मैं गज़ा जा चुका हूँ, मैंने अपनी आंखों से वो तबाही देखी है। जब 2008 के अवाखिर में इसराइल ने बमबारी की गज़ा के ऊपर, दे टारगेटेड सिविलियंस, यानी ये नहीं कि कोलैटरल डैमेज था, दे एक्चुअली टारगेटेड स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स एंड जर्नलिस्ट। जो मिसाल के तौर पे खबर रसां इदारे हैं, उनकी बिल्डिंग्स को टारगेट किया, बॉम्बिंग की गई है, कोई रिपोर्टिंग ना कर सके। सो ये एक टेररिस्ट स्टेट है, एक्सट्रीमिस्ट स्टेट है, एंड दिस इज द नैरेटिव वी रियली नीड टू मेक नॉर्मल इन द वर्ल्ड। हमें ये बताना है दुनिया को कि ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है, ये कोई ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। दिस इज एन एंटिटी दैट वांट्स टू डिस्ट्रॉय द पैलेस्टीनियन पीपल एंड टेक द लैंड फ्रॉम देम, एंड इट हैज बीन डूइंग दैट। यस, दे हैव बीन डूइंग इट एंड दे आर डूइंग इट विद द यूएसए। अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने 735 मिलियन के आर्म्स सेल किए हैं इस तनाज़े के दौरान। $735 मिलियन की आर्म्स सेल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इजराइल को की गई है। Can Israel do anything without the support of US? Actually, no. You know, just I will come to the roots of what happened right now. Actually, this situation started during Ramadan, that when Israel not allowed a lot of Palestinians to go to pray in Aqsa Mosque, Aqsa Masjid. This is normal thing actually. Usually they're putting ages that who is above 50 allowed to go and pray in Aqsa Masjid. Who is less he is younger than this not allowed to go there. Okay, and they are speak about free. You know, in human rights are speaking about free of praying, free of moving, free of transport, and this is actually is not in progress in Israel. Okay, I'm a Palestinian, live 25 kilometers from far from Aqsa Masjid. I'm not allowed to go and pray there because I don't have a permission from the Israelis to go to across the border, because you know they occupied all our area, but they take Jerusalem and completely under their control. So we are not allowed without getting a permission from them to visit our masjid, our holy masjid, Al-Bayt al-Muqaddas. This is one of the problem. Second thing they are doing in the end of Ramadan, they try to transfer some Palestinians from Sheikh Jarrah, from their own homes, which is they own it since senators. Which countries do you think will be supporting Palestine outrightly in this upcoming UN Assembly session? Actually, most of Muslim Ummah and most of Arab countries are supporting Palestinians. People, governments, leaders, emotional and deep of their hearts are supporting and solidarity with Palestinian people, especially in Pakistan here. Your leadership kindly and strongly is supporting Palestine, not from now, since even before the establishment of Pakistan in 1931. When they start establishing we speak about Allama Iqbal, we speak about Qaid A'zam, we speak about Muhammad Ali Johar, which is grave actually. It is Masjid Aqsa. Jerusalem, He is buried in Masjid Aqsa. And we appreciate
what our brothers and sister Pakistani people doing for Palestine. We appreciate your leader, your government for their hard and strong support for Palestine. And even I keep in touch with my colleagues in many countries are working at our embassies there. Your diplomats supporting always Palestine, especially in the United Nations. You work hard with us and we appreciate that. But actually we are needing more and more lobbying. Your government is doing their own, kindly doing their strong work for supporting Palestine. We need more work from media men, from civil society, actually. This is indeed needed. Right now, social media, it is more free, have freedom more than other international channels. Yes. According to that, civil society, media men, if you can make lobbying with your colleagues, your friends around the world, to explain to them the facts of Palestinian problem, the roots of Palestinian problem, which is not starting now. It is starting since 1918, when the British came and occupied Palestine, and it started with the promise from Balfour in 1917 to give Palestine for free for the Zionism, to establish their own country on our own land. These facts need to be clear, and we need to have campaign, not just when you are bleeding. Campaign and lobbying. When you are bleeding. It needs to be campaign all the time to explain for the world what the real story of Palestine. You know, the British create our problem. Yes. But 3 days before, we saw 100,000 British people on the roads supporting Palestine. Yes. So, world is changing. But some of the governments, foreign governments, not understand what is happening. They are blindly supporting Israel and forget the people in their hearts start supporting Palestine. So someday, soon, this democracy will be loose because you are not facing the real feeling of your own people. You are we hope that this happens. On one hand, you are supporting Israel, and your people are supporting Palestinian. So how is that the real democracy? This need to be a message, especially for the Americans. लॉबिंग है, कैंपेनिंग है, ये दो चीज़ें तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहैसियत मुस्लिम उम्मा क्या मुझे नहीं पता हम उसको अभी उम्मत कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो एक बड़ा मजेदार, हम तो डिवाइडेड से लोग हैं। हाँ, बिल्कुल में तो हैं हम, कहने के लिए तो है ऑफिशियली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु, मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और वो उस पर जुल्म नहीं करता और उसको उस पर जुल्म होने नहीं देता। वी कैन नॉट अलाउ दिस टू हैपन एज मुस्लिम्स। हम जहाँ भी हों, फ़लस्तीनी जो हैं वो हमारे भाई हैं, हम उनको कभी नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं पूरी दुनिया के मुसलमानों से कश्मीर के बारे में सिंपैथी, पाकिस्तानियों के डीएनए में, हमारे सिस्टम में, हमारे खून में, हमारी रगों में फ़लस्तीन की मोहब्बत जो है वो दौड़ती है। जिस तरह हिज एक्सेलेंसी ने बहुत खूबसूरती से बताया कि इकबाल की शायरी अगर आप पाकिस्तान की क्रिएशन से पहले पढ़ लें, उन्होंने इस चीज़ की निशानदाही की है कि क्या होने वाला है, आगे अभी होने वाला क्या है। फिर जिना रहमतुल्लाह, उनका जो मौक़िफ़ था फ़लस्तीन के ऊपर बहुत सख्त मौक़िफ़ था कि हम फ़लस्तीन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अब प्रैक्टिकल स्टेप्स की तरफ आना है कि प्रैक्टिकली हम क्या करेंगे। हिस्ट्री तो हमने बयान कर दी, बहुत सारी बातें, रेजोल्यूशंस भी होगी, कॉन्डेमनेशन भी होगी, लोग भी रोड्स पे आ गए। प्रैक्टिकली मुस्लिम्स को क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी चाहिए, हमें इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की तरफ जाना चाहिए। जब तक हम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, अपने कर्जे नहीं उतारेंगे, तब तक हम इंडिपेंडेंटली बोल नहीं सकेंगे। तो अगर बजट IMF की मर्जी से बनाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? थैंक यू, यू हिट द नेल ऑन द हेड। This is the problem. Turkey, the president of Turkey is so vocal and so brave. There is a reason for that. उसके पीछे एक वजह है। वजह ये है कि they are economically independent. They are not dependent on any of these powers to open their mouth and defend their cause. And that's why Erdogan has actually gained that respect in the world as the leader or as one of the leaders of the Muslim world. इसी तरह अरबों को और पाकिस्तान, हम एक सुपर पावर हैं। I mean,
عربی بھی تو ویسے ٹیکنیکلی تو انڈیپینڈنٹ ہی ہیں لیکن فائنینشیل انڈیپینڈنس کی اگر ہم بات کریں تو عرب ممالک بھی جو ہیں تیل کا وافر ان کے پاس وہ تو انڈیپینڈنٹ ہے فائنینشلی. نہیں, فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. their money is managed by banks in the Western world and the interest system is so intricate and so complicated کہ ایک اس چھوٹی سی سیٹنگ میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. لیکن باٹم لائن یہ ہے, سولوشن یہ ہے کہ گو ٹورڈز اکنامک انڈیپینڈنس, دین فارم این اکنامک بلاک, a commonwealth of the Muslims, and economically pressurize, invest money in media, number one, that's very important. Without media, you don't have a voice. آپ کی کوئی آواز نہیں ہے. انٹرنیشنل میڈیا آپ کا یہ اسکائی نیوز, CNN, BBC, I'm sorry to say, حقیقت یہی ہے کہ وہ ان کے جو ہے نا غلام ہیں. لٹرلی دے ول اسپیک دا لینگویج آف دا ماسٹر. تو وہ آپ کو کبھی انصاف نہیں دیں گے, وہ آپ کے حق میں کبھی نہیں بولیں گے. بلکہ آپ اگر BBC کے انٹرویوز اٹھا کے دیکھیں, جو اسرائیلی جو ایمبیسڈر ہے لنڈن میں, اس کے انٹرویوز دیکھیں آپ, وہ یہی کہہ رہی ہے کہ ہم سیلف ڈیفنس میں جو ہیں وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اور وہ مان رہے ہیں, اور ان کو چیلنج نہیں کر رہے, ان کو امیجز نہیں دکھا رہے بچوں کے سفرنگ کے. یہ بومنگ جو سویلین بلڈنگز کی بومنگ ہو رہی ہے, جو جرنلسٹ کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے, ہاسپٹلز کو گرایا جا رہا ہے, none of this is seen by the Western audience. یہ سوشل میڈیا انڈیپینڈنس is very important, that comes from economic independence. Exactly. اچھا, ہمارے ساتھ اطہر کاظمی صاحب موجود ہیں, برطانیہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, صحافی ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم اطہر. جی وعلیکم السلام. اطہر صاحب, 1 لاکھ لوگ باہر نکلے لندن کی سڑکوں پر اور انہوں نے مظاہرہ کیا اسرائیل کے خلاف. اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے یا کیا اثر ہوگا, اور کیا گورنمنٹ جو برطانیہ کی ہے وہ کچھ ہلے گی اور کوئی ہم چیز دیکھ سکیں گے آنے والے UN جنرل اسمبلی کے اجلاس میں ان کی طرف سے؟ دیکھیں, جب بھی عوام باہر نکلتی ہے تو کوئی بھی الیکٹڈ حکومت ہو اس کے اوپر پریشر ہوتا ہے. جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا, 1 لاکھ سے زیادہ لوگ نکلے. اس وقت برطانیہ میں کرونا کے حوالے سے بھی سچویشن ہے, لیکن اس کے باوجود عام لوگ باہر نکلے. انہوں نے فلسطین کے حق میں وہاں پہ نعرے لگائے, اور وہ اپنی حکومت سے مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کوئی یہ مطالبہ نہیں کر رہے کہ آپ اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیں یا آپ اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کر دیں. پوری مغربی عوام صرف ایک مطالبہ کر رہی ہے کہ صرف آپ اتنا کہہ دیں کہ جو اسرائیل کر رہا ہے وہ غلط ہے. تو مغرب کی جو حکومتیں ہیں وہ تو ابھی تک یہی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اسرائیل جو کر رہا ہے وہ غلط ہے, تو باقی وہ کیا ایکشن لیں گے. تو اگر صاحب انگلینڈ کی اگر ہم بات کریں تو برطانیہ میں گورنمنٹ پر ان پروٹیسٹ سے اس قسم کے معاملات میں پریشر پڑتا ہے کہ گورنمنٹ یہ کہہ دے گی کہ وہ غلط کر رہے ہیں, حمایت نہیں کریں گے اسرائیل کی؟ دیکھیں, اگر ہم برطانیہ کی پروٹیسٹ کی ہسٹری دیکھیں تو یہاں پہ سب سے بڑا جو پروٹیسٹ ہوا تھا وہ عراق وار سے پہلے ہوا تھا. تقریباً اس میں 2 ملین کے قریب لوگ نکلے تھے, لیکن اس کا کیا اثر پڑا؟ پریشر ضرور پڑتا ہے حکومت کے اوپر, لیکن کرتے فیصلے نہیں تبدیل ہوتے. لیکن بالکل, جو ان کی اپنے ان کے مفادات ہوتے ہیں, جو اپنے ان کے انٹرسٹ جس میں ہوتا ہے وہ وہی کرتے ہیں. تو اس احتجاج سے اثر تو پڑے گا, لیکن اب جو چیز ڈیفرنٹ ہے نا, وہ چیز ڈیفرنٹ ہے سوشل میڈیا. اب سوشل میڈیا جس طریقے سے اس کو کور کر رہا ہے, عوام کے اندر زیادہ اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے, اور اسی سے اب لوگوں کو امید ہے کہ جو سٹیزن جرنلزم ہو رہا ہے, جس کے حوالے سے شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ذکر کیا, اس پہ اب آپ کو صحیح رپورٹنگ نظر آ رہی ہے, اور عوام کا پریشر پڑ رہا ہے حکومتوں کے اوپر, اس لیے کہ میڈیا تو ایک نیریٹو کنٹرول کرتا ہے. اس کی آپ رپورٹنگ ابھی بھی دیکھیں تو ابھی بھی ان کو یہ لگتا ہے کہ کوئی 2 ممالک کی جنگ ہے, کوئی 2 بڑی فوجوں کی جنگ ہے, وہ کہتے ہیں دونوں سائڈز. تو وہ تو اس کو صحیح طریقے سے دکھاتے نہیں ہیں, لیکن عوامی پریشر آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. تو اطہر صاحب, برطانیہ کا میڈیا کس طرح سے ویسے اس کو رپورٹ کر رہا ہے اس ساری چیز کو, اگر ہم اسپیسیفکلی صرف برطانیہ اور یورپین میڈیا کی بات کریں تو؟ دیکھیں, اس ریلی کے اندر میں خود گیا ہوا تھا, میں نے بھی وہاں سے کوریج کی, تو میرے لیے وہ بڑا حیران کن تھا کہ وہاں پہ عالمی میڈیا کی بالکل کوئی کوریج نہیں تھی. عالمی میڈیا وہاں پہ بالکل نہیں آیا ہوا تھا. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنے لوگ آئیں گے. اگر پھر جب لوگ آ گئے تو اس کے بعد بھی ان کے پاس اتنی ریسورسز ہوتی ہیں کہ وہ ڈپلوائے کر سکتے ہیں. تو میڈیا کی کوریج ان کو آپ عام زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ بڑی ہومیوپیتھک قسم کی ہوتی ہے. اس حوالے سے ہمیشہ اس طرح پورٹرے کیا جاتا ہے. شروع آپ کوئی بھی رپورٹ دیکھ لیں تو شروع وہ اس طرح ہوتی ہے کہ حماس نے راکٹ فائر کر دیا, اسرائیل نے یہ کر دیا, اور کوئی بھی اگر آپ میڈیا کی رپورٹنگ دیکھیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے یہ پچھلے ہفتے شروع ہوا ہے. حالانکہ یہ کوئی پچھلے ہفتے یا 5 دن یا 10 دن یا 10 سال یا 20 سال کی کہانی نہیں ہے. وہ پورا اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ مس ہو جاتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے, اس نے راکٹ مارا اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں شروع ہوئی ہیں. تو وہ کانٹیکسٹ اور وہ جو اس میں ہونی چاہیے ڈیٹیل وہ نظر نہیں آتی.
बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अतर काज़मी साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। फाइनली आपने तो बता दिया कि क्या हमारा रास्ता है। आई थिंक योर एक्सीलेंसी, इफ यू कैन just give one message, one-liner message to the world, what exactly is Palestine hoping for? We are looking for justice, freedom, establishing our own state, independent state with Al-Quds as its own capital. This is what I'm looking for. But actually, I like to speak about, maybe small things happened with me during the last days. You know, I study PhD in China. Some of my classmates are keep in touch with me, and they ask me actually some smart questions. One of the questions that he told me, if I'm joining a club, I need to follow the procedure and the rules of that club. If I'm not, they will throw me out. So, Israel, it is part of the international community. It is a member in the United Nations. That's what my classmate asking me. So, and they are not following the orders of that international club. And as I explained to you before, that we have 700 resolution from the General Assembly and 86 resolution from the Security Council. And they told, he asked me directly, Israel, when it was joining the United Nations as as a member, a full member of the United Nations, they give them, it was under two conditions. First, accept and keep in progress the activate Resolution 181, which is giving the right of two states on the land of Palestine. This is why the United Nations. And the Resolution 194, which speak about right of return for the Palestinian refugees, which was transferred from their own homes in 1948. So according to that, he asked me why there is no campaign to take Israel out of and that is the biggest question that the whole world is asking. And this is the question that we try to raise in this transmission.